What's up, guys? So I'm live right now, and I'm not going to move a lot, and we're going to start the chat live with one of my favorite songs by The Weeknd. This is what I'm listening to currently. So आज के लाइव के लिए, because it's on my birthday, I have asked all for some questions which you all have given me and I've actually written them down. तो जो questions आप लोगों ने पूछे थे उसके answers मैं देने वाला हूँ आप सबको. First, there are a couple of people wishing me a happy birthday online. So thank you Tushar Shetty, thank you Arjun Bijlani, thank you buddy. And I've got some surprises for you all as well. Some musicians are going to join us. कुछ musicians जो मेरे favorite हैं, they're going to come online. Bharti, how are you? Bharti, how are you? Bipasha, how are you? Lots and lots of love. Bharti, if you want to join us for a bit, I'm going to ask you to come on. Let's see if Bharti accepts. We are asking her to accept and come online and tell us a couple of jokes. Priyal, I'm going to call you back. Thank you so much. But before we get on with it, I want to, there's some questions जो मैंने पूछे थे लोगों से मुझे पूछने के लिए. So I'm going to answer those first so that we can move ahead. So a question from B Wellwishers was, when will you keep your mustache again? So I think personally I'm not too sure when I want to keep a mustache or whether I want to keep a mustache or no. पर देखना पड़ेगा कोई character मिले or something like that. I could get a mustache for that, definitely. I could try to do that. Then what is my biggest memory of The Rock? The biggest memory of The Rock, I think one of the matches of The Rock that I really loved, or I really love, is Rock versus Austin at WrestleMania 17, where Rock and Austin went, and Rock cut one of the best promos during that time and most spectacular promos during that time. And he absolutely owned Austin. He called him a cue ball because he's bald on his head. And I love WrestleMania 17. It had Limp Bizkit's theme song. Then Aman Shukla asked me about my upcoming films. Well, upcoming films, to abhi, I don't think so anyone knows what is up and what is coming and what is going to happen in the future. But all I can say is Coolie #1 was supposed to release a week from now. But as the world is basically dealing with this, हम सब इस चीज से लड़ रहे हैं इस वक्त, and we all have to be home, be safe. Everything comes later on. So I do wish that one day Coolie #1 releases in a theater, and you all can watch it in a theater hopefully soon. That's my wish from within. Someone who's supposed to join us today is Shan. I don't know if Shan is online. If he is online, he's going to send me a request to. Did I wish Sachin Tendulkar Aila? No, not as yet, but Sachin sir, you are God. Happy birthday. Obviously, it's his birthday first, then I figure in the scheme of things. So happy birthday to you, Sachin sir. And okay, so more questions are there. Any surprise of Coolie? Well, I wanted to put out something for Coolie, but they stopped me. It was something of Kuwar Mahindra Pratap, and it was altar. That's all I can say. Just a little bit wo tha. Was the cake you had last night the best cake you had in your life? Probably, yeah. I ate my cake as well last night. It was amazing. Okay, chalo, Bharti is ready, so we'll go live with Bharti for a bit. Bharti, kaise aap? How are you? Happy birthday! Thank you so much. आप क्या अपने पति को मार रहे हो इस वक्त? क्यों, क्या हुआ? हमेशा वही फोटोज आते कि वो पिट रहे हैं आपसे हमेशा. वो क्या करे, अभी पैसा कमाने के लिए मार तो उसको खानी पड़ेगी ना. बट वो है आपके साथ, आप दिखा तो दो उन्हें. बिल्कुल मैं दिखा दूंगी, मैं मार नहीं रही. उन्हें खूब सारा प्यार दीजिए. मैं दिखाती हूँ. ये हैं बेचारे, अभी उठे हैं. हेलो. What's up? How are you? I'm good. How are you? कैसे हैं आप? Very good. मैं बहुत अच्छा हूँ. Many happy returns of the day. Thank you buddy. भारती जरा नीचे का भी वस्त्र दिखा दो.
So पार्टी और कैसे बर्थडे मना रहे हो फिर आज? बस आज केक ही खा रहा हूँ, और क्या मतलब, आज का दिन केक खा सकते हैं सब, वही खाना पीना चालू है। एंड बस मैंने सोचा कि आज का दिन थोड़ा फैंस के साथ बिता दूं। उनके जो क्वेश्चंस है हम लोग कभी आंसर करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते पूरे, तो मैंने लिख दिए आज। मैंने बोला मैं आप सबको actually, बता दूं, जितने भी लोग वरुण धवन के फैन हैं, मैं और वरुण एक फ्लिपकार्ट का शो कर रहे हैं साथ में। एग्जैक्टली वी आर बिल्कुल कर रहे हैं। और मतलब आपके वीडियोस देखती हूँ मैं, और मेरे को शर्मिंदगी होती कि आप खुद से अपने वीडियो इतने अच्छे बना रहे, मेरे से क्यों नहीं हो रहे? नहीं, आपके भी बहुत फनी हो रहे हैं, राघव से तो बेटर हो रहे हैं आपके। सच्ची में ठीक जा रहे हैं? नहीं अच्छे हो रहे। बट भारती, क्योंकि मेरा बर्थडे आज, आप हमेशा वो एक बच्चे के आवाज में बात करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप वो बच्चे के आवाज में मुझे विश करें आज। हेलो भारती, कैन यू हियर अस? आई थिंक इट गॉट स्टक। We refresh it. मुझे पता नहीं कि मेरा, हाँ आई कैन सी। मैं आ गई। मैं कह रहा था कि बच्चे की आवाज में आप आपका, पर मुझे आप क्यों नहीं दिख रहे? मैं आ जाऊंगा वापस, आ गया मैं। आ गए। तो बच्चे की आवाज में क्या सुनना चाहते हो आप? लोरी। मेरा बेटा वरुण धवन, वरुण बेटा आपको जन्मदिन की वो क्या कर रही हूँ मैं? वरुण बेटा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाई। आप ऐसे ही हैंडसम रहो, और मेरी जो होने वाली बहू नताशा, उसको मेरी बहुत सारी पपियां देना, और उसको कहना कि उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मैं कह देता हूँ आंखें उसकी अच्छी है, बट आपके गाल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। भारतीय वेटिंग की कब हम मिले, कब हम साथ में शो करें। हाँ यार, अभी होगा जल्दी, होपफुली। लेट्स प्रे। वरुण, ऑल द वेरी बेस्ट, जितनी भी आपकी मूवीज आने वाली है। और आप ऐसे ही हेल्दी रहो, पूरी फैमिली आपकी हेल्दी रहे, और जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं आपकी सब पूरी हो इस जन्मदिन पे। मतलब ये आपका बेस्ट बर्थडे हो। इसके बाद जितने भी इतना साल आपकी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले हैं, आप सुपरस्टार हो। थैंक यू भारती, एंड लॉट्स ऑफ लव। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कॉमेडी को किसी ने आगे बढ़ाया है वो आप है। I know such a big inspiration not only for the women but even for the men, for everyone where comedy is concerned हमारे देश में। आपने बहुत बहुत मेहनत की और आप ऊपर आए, and I'm a big lots of थैंक यू सो मच वरुण। और वरुण, मेरी ना एक नीज है दीक्षा, वो इतनी पागल है आपके पीछे। हाँ। इतनी पागल है वो जब भी आपको नताशा के साथ देखती है उसको गुस्सा आ जाता है। अच्छा उसको बोलो, जबकि वो खुद 17-18 साल की है। तो फिर टाइम है ना, उसको बोलो उसके लिए। वो कहती मुझे आपका दामाद यही बनेगा। वो इतना मतलब मन ही मन में तुमको पति बन करके बैठी है, और उसने 3-4 करवा चौथ भी रख लिए हैं। अरे तो ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उससे जरूर मिलवाऊंगी आपको। 150% डन। बाय वरुण, टेक केयर, स्टे होम, stay home, stay safe. So guys, we are back to doing some fan questions now. Shan is supposed to join us. I'm waiting कि Shan का कब मुझे message आए, क्योंकि Shan is going to do something very special for us. Let's search Shan. Azim is organizing Shan. Azim online होगा इस वक्त। Azim एक दोस्त है मेरा, वो hopefully Shan को ले आ पाएंगे। We should just wait कि Shan, sorry, I think Shan was on sometime back, but वो मुझे मिल नहीं रहे। If he sends a message, भाई typically birthday पे what do you do? आदित्य रॉय कपूर है हमारे साथ। अगर we can go live with आदित्य रॉय कपूर, बहुत मजा आएगा, क्योंकि he's been cutting weight for a big fight of his. He's been training in a farm, in a ranch actually. वो एक ranch में in the farmland उनकी ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त।
and it's been amazing. But till we try and connect with him, how does 33 feel? The big 3 and 3, the double threes. यार I don't know how it feels, to be very honest, क्योंकि इस वक्त जैसे कि दुनिया रुकी हुई है, everything is stopped and we are just paused. वो pause button किसी ने दबाया हुआ है. It feels like that at the moment. So I don't know how it actually feels to grow older, and request pending is what Azim is saying. I don't know how to check request pending. Is there any way to check request pending? Let's see. I don't know how to check that out, Azim. You've got to hold on with me for just 5 for his ID. And hopefully that will come. Guru Chaudhary, what's up, Guru? How's it going? Thank you, buddy. Thank you so much for the wishes. So 33 just feels amazing. I mean, it just. I'm going to try and find Shan if I just know his ID. Shan Singer, is it this? I don't think so. Okay, there are a lot of requests to go live with me. I'm going to check if Shan is on this. So we are going to find Shan now because it's under Singer Shan. Okay, I think I'm going to send Shan a message. Singer _ Shan. Sorry guys, I am trying to find Singer Shan and I'm not being able to. Singer. Fact. Okay, I can't find the request for some reason, and we are stuck because of that. When you go live with someone, you can see, watch the video. So how do we go live with? Let's see, 1 second. Singer. Sorry, you look like you're finding Nemo. Yes, no, I'm trying to find Shan. I know I might need to add him and come back to this. Swati Sharma, thank you so much. And a lot of other messages coming through. My favorite actor, Varun Dhawan, thank you so much for that as well. And happy birthday, thank you. Yeah, I might need to disconnect and just restart it so that I can get Shan on this and then everyone can join again. So I'm going to do that. Thank you.